As per the National Crime Records Bureau, a whopping number of 128,531 cases of crimes against children were registered in 2020. Data reveals that crimes against children increased by a staggering 43.8% in just 4 years since 2016. To draw reflective attention towards the need for securing childhoods and empowering children, Kailash Satyarthi Children's Foundation observes 11th January every year as Surakshit Bachpan Divas across the country. Hello and welcome to this very special show on a very special day. सुरक्षित बचपन दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत है चाइल्ड राइट्स मूवमेंट को आगे बढ़ाना, टू इग्नाइट एंड एनहांस कंपैशन अमंग सिटीजंस यंग एंड ओल्ड रिगार्डिंग चिल्ड्रन and bring them together to fight against the various forms of exploitation of children and ensure that the world becomes a safe place for them. और इस मुहिम में लगातार जो अगुवाई कर रहे हैं वो है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन. They observe this day as सुरक्षित बचपन दिवस. This happens to be the birthday of Nobel Peace Laureate कैलाश सत्यार्थी. आइए आपको कुछ आंकड़े दिखा दें इससे पहले कि हम उनसे बात करें और इस पूरे मसले के बारे में और आगे बात करें. There are a total of 4,709 victims who were reportedly trafficked, of which 2,222 were children. 59,262 children were reported missing. तो ये आंकड़े जानना बहुत जरूरी है और क्यों ये दिन ऑब्जर्व करना जरूरी है वो इस आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं. अब शुरुआत करने से पहले हम इस कहानी से आपको कुछ बताना चाहेंगे जिसने सुर्खियों में भी ये कहानी आई थी. Recently a case came to light from Chennai where a 17-year-old school girl died by suicide. Sexually harassed, she left behind a heartbreaking suicide note which read, "Girls are only safe in a mother's womb and grave." But this is not the only case. In the past few weeks ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जिसमें आत्महत्या हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, एंड इन 2 केसेस allegedly by teachers. देखिए ये रिपोर्ट. Girls are safe only in their mother's womb and grave. These were the last words Geeta wrote down on a piece of paper. Physically assaulted and sexually abused, she chose to take her life, leaving behind a suicide note pleading for justice. Shattered beyond belief, Geeta's family is determined to bring the guilty to book. A student of class 11, Geeta did not name anyone specific in her suicide note. Police say her letters suggest abuse by 3 people: a teacher's son, a relative, and an old student of the school she was in. டீச்சரோட பையன் தான் டீச்சரோட பையனுக்கு லாக்கி இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்கூல் இஸ் நாட் சேஃப் அப்படி சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. மேல அவ மோஸ்ட்லி யாருக்கு பேசவே மாட்டா. அவ நல்லா படிப்பா, கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவ நல்லா படிப்பா, பட் அவ மோஸ்ட்லி பேச மாட்டாங்க. Chennai police have arrested her former schoolmate under provisions of the Protection of Children from Sexual Offences or POCSO Act. Geeta had allegedly met him on Instagram. Police claim they were in a relationship for 8 months, but things went awry when he started assaulting her sexually. The harassment only compounded, pushing her to a point of no return. The hunt is now on for other suspects. In another part of Chennai, this 21-year-old college student had to pay with his life for allegedly blackmailing 2 schoolgirls he had befriended on Instagram and extorting money on the pretext of leaking their private pictures. The girls confided in another young man they met on social media
and he in turn kidnapped and murdered the college student. Activists and cyber security experts are visibly worried about new forms of sexual violence via social media, and the pandemic has only made matters worse with children switching to online mode of learning. Children have been negatively groomed online to create self-generated content, which is going to equate like CSAM. So like sending selfies or nude selfies. This was in one of the very, very scary things which was happening with our children, especially on these social media platforms like Instagram or Telegrams, which they commonly use while they are playing games. I don't think so it will be done in a very short period, 30 days or 1 or 2 months. It will take time, at least 4-5 months. Then they go to step 1, step 2, then they'll share their intimate talks, then it goes to the next level. It's all the trust. Many blackmail, I will share it, I will go to the police, I will go to the law, I will take help, and I will do all these things. This has to be taught in a right way to the children. In the last 3 months, at least 3 other students in Tamil Nadu alone have taken their lives following sexual harassment. In some cases, the alleged perpetrators were teachers too. Chief Minister M.K. Stalin too has spoken out publicly assuring justice. வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூலமாகத்தான் உங்ககிட்ட அத்துமீறின நபர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தண்டனை பெற்று தர முடியும். அதனால யாரும் தற்கொலை செஞ்சு கொள்ள வேணாம்னு ஒரு தந்தையா, உங்க சகோதரனா, உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தனா கேட்டுக்கிறேன். உங்களை பார்த்துக்க நாங்க இருக்கோம், நான் இருக்கேன், அரசாங்கம் இருக்கு. With cases of child sexual abuse and rape coming to light from across the country, Geeta's poignant note is another grim reminder of how vulnerable our children are to sexual abuse and exploitation. Kailash Satyarthi Children's Foundation's Justice for Every Child campaign is providing much needed legal and mental health support to child victims of sexual abuse and rape across the country. Your support can go a long way in ensuring continued support to vulnerable children. Bureau Report, NDTV. अब मैं स्वागत करना चाहता हूं कैलाश जी का टू टॉक मोर अबाउट द सुरक्षित बचपन दिवस and why this is at the core of his life's philosophy. कैलाश सत्यार्थी जी, NDTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरी हो जाता है इस विषय पर बात करना और सुरक्षित बचपन दिवस के पीछे जो फिलॉसफी है उसके बारे में आप बताएं. देखिए, दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में इतनी सारी तरक्की के बावजूद हमारा बचपन, हमारे बच्चे अभी तक सुरक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं हो पाए हैं, उनके स्वास्थ्य की गारंटी नहीं मिल पाई है, आजादी नहीं मिल पाई है, उनका बचपन नहीं मिल पाया है. इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर एक ऐसी मुहिम चलाएं जो इन बच्चों को उनका बचपन लौटा सके. और मैं हमेशा से कहता रहा हूं मेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में कि एवरी चाइल्ड इज free to be a child, free to learn, free to play, free to dream, free to touch the sky, free to grow. So in short, we have to create a world which is truly a child-friendly world. And that means child-friendly politics, child-friendly economy, child-friendly society, child-friendly religions, cultures, civilizations. Everything has to be child friendly and child centric. ये हमारी कोशिश रही है और हमारे लिए तो हर दिन एक मुहिम का हिस्सा है. मैं तो लगभग 40-45 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि हम जरूर हमारे बचपन को सुरक्षित कर पाएंगे. कैलाश जी, you talk just now about having a holistic approach. आप हमें बता सकते हैं कि ये होलिस्टिक अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और कहाँ अभी कमी आई है? मेरे ख्याल से आप भी इस चीज को मानेंगे कि कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन और क्या क्या करना बाकी है?
निश्चित तौर पर सुधार तो हुआ ही है। हमारे भारत में भी बहुत अच्छे कानून बने हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स बनी हैं, लागू भी हो रही हैं एक हद तक, लेकिन अभी बहुत काम की जरूरत है, देश में भी और पूरी दुनिया में भी। जहां तक होलिस्टिक अप्रोच की बात है, समटाइम्स वी सी द प्रॉब्लम्स इन सेगमेंटेशन that cannot be seen in isolation, especially when it comes to children. हम अगर शिक्षा को, बच्चों के स्वास्थ्य को, बच्चों की सुरक्षा को सबको अलग अलग करके बांट के देखेंगे और एक संपूर्ण बच्चे की सुरक्षा और उसके व्यक्तित्व के विकास के बारे में नीतियां और कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तो फिर हम पिछड़ते रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजादी ये बच्चों को एक साथ मिल सके, क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक हैं। अभी हमने जो चीज अभी जो देखा चेन्नई की बच्ची के मामले में, आप देखिए कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। अगर हमारी बेटी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बेटी मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले एक नोट लिखती है कि लड़कियां अगर कहीं सुरक्षित हैं तो सिर्फ मां की कोख में सुरक्षित हैं या ग्रेवयार्ड में सुरक्षित हैं, शायद वो ये भी नहीं जानती कि मां की कोख में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमें इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हर रोज इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम लोग कई बार उसे इग्नोर करते रहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समाज में बच्चों के प्रति करुणा का भाव जगाएं। Kailash ji, you know, you explained the concept of holistic approach really well. But while one does have to concentrate on an educated child being an aware child, how important is it to impart this education among parents as well? An educated parent will raise an aware child. Definitely, education means building connections, building sense of responsibility, building tolerance and learning from each other. And if parents are given that kind of education to be friend with their children, then many of the problems could be solved. Children should also be made aware कि भाई उनके अधिकार क्या हैं और उनकी रक्षा कैसे की जाए। अपने खुद के शरीर के बारे में उन्हें जानकारी मिलना चाहिए और शरीर की रक्षा कैसे की जाए, इसकी पढ़ाई हर बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन के साथ मिलनी चाहिए। जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता था कैलाश जी, एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, दैट अंडर द जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन which we are running right here, we are currently looking at over 7,500 cases already along with our partners and providing legal and mental support to hundreds of children in need. Do you think that this is a welcome step and needs to be stepped up and taken to the next level? Of course, that is the very purpose of this campaign, because when we realize that many of the children and their parents had to wait for years and years, perhaps for decades, for justice, how could it be possible? How could it be tolerable? तो हम लोगों ने फिर ये there is a four-pronged approach. One is that we have to provide legal support for every child who is victim of sexual abuse and rape. Secondly, we have to ensure health support, and particularly the mental health support to the survivor as well as to the parents of that survivor. And thirdly, we have to ensure rehabilitation, education for that survivor, victim, as well as ensure the compensation, because we have good schemes in India. Nirbhaya scheme is one of them. So we have to ensure that rehabilitation and compensation. And fourthly, we have to sensitize all the stakeholders which are the part of justice delivery system in the country, criminal justice system. And that has to be child friendly, that has to be prompt, that has to be child centric and feel much more morally responsible towards the children. कैलाश जी, ये जो आपने लास्ट के 2 पॉइंट्स, एक लीगल सपोर्ट की बात की, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात की, लेकिन इसके अलावा आपने बात किया फैसिलिटेटिंग रिहैबिलिटेशन एंड कॉम्पनसेशन, यानी कि मुआवजे की बात, एंड टू सेंसिटाइज स्टेक होल्डर्स। इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कि ये कितना जरूरी है?
ये बहुत जरूरी है। अगर हमें वक्त पर बच्चे को न्याय दिलाने में सफलता भी मिल जाए तो बहुत जरूरी होता है कि उनको समाज में पुनर्वासित किया जाए, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान माँ बाप को अपने मोहल्ले, अपने शहर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत कलंक का धब्बा लगा दिया जाता है कि इसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। तो उनकी बहुत आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है और फिर वो बच्ची और पूरा परिवार और कई अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होता है। बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं, कई बार वेश्यावृत्ति में धकेले जाते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि उनके पुनर्वास को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित किया जाए, आर्थिक पुनर्वास को भी और सामाजिक पुनर्वास को भी। और दूसरी चीज ये है कि अगर उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में लगे लोग, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, या और दूसरी संस्थाएं जो बच्चों के साथ काम करती हैं, उनमें काम करने वाले कार्यकर्ता हों, उनको ये महसूस होना चाहिए, सिंपल बात कहता हूं मैं, आई ऑलवेज से वन थिंग, दैट दीज चिल्ड्रन are our children. Whose children are they who are being victimized and re-victimized? They are raped, they are sexually abused, and then the long, cumbersome, expensive, costly process of justice delivery system बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। इसलिए जरूरी है कि उससे जुड़े हर स्टेक होल्डर को, हर व्यक्ति को और संस्थाओं को हम लोग न केवल कानूनी जानकारी के माध्यम से उनको जागृत करें, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि उनके अंदर उस करुणा के भाव को, उस नैतिक जवाबदेही और जिम्मेवारी के भाव को भी जगाएं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। Absolutely. Kailash ji, we have been able to explain the purpose behind this campaign, why it is essential. We're going to stop for a short break at this moment, but do stay with us, Kailash ji, as after the break we are going to take this journey forward and give you examples, tell you stories on how the campaign is making a difference and what more work needs to be done. Stay with us. एक बार फिर से आपका इस मुहिम में बहुत बहुत स्वागत। Just 4 months after the gruesome Nirbhaya gang rape case shook the nation, another shocking story came to light. इस बार ये कहानी थी 5 साल की गुड़िया की, whose name we have changed obviously to protect her identity. She got justice after 7 long years when the accused in this case were finally convicted. Though this case revealed glaring gaps in the system, it also changed the way our judiciary and the judicial process deals with crime against children. Let's take a look at this report. April 2013, the cruel and inhumane case of 5-year-old Gudiya being gang raped shook the nation, even as it was coming to terms with the Nirbhaya gang rape and murder. Two men enticed Gudiya with chocolates into a room where they brutally raped her, tortured her and left her to die. She was found 40 hours later, tied up, bleeding and barely alive. Doctors were horrified to find the bottle and candles in her privates. She required 5 corrective surgeries over a year. The accused, Pradeep Ram and Manoj Shah, were apprehended a week later from Bihar. The case revealed glaring gaps in the system. India demanded stronger laws and swift justice. देखिए, पहली बात तो आप थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने जाइए। एक गरीब परिवार के लोग अगर थाने के अंदर जाते हैं, उसके साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है कि वो रिपोर्ट भी कई लोग नहीं लिखाते, चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि उसको इतना प्रतापित किया जाता है कि वो उल्टा सीधा सवाल पूछता, कहाँ थी, कैसे थी, तू कहाँ था, ये कहाँ थी, उल्टा सीधा पूछता कि वो डर के मारे खुद ही चला जाता है। The two accused were booked under the Protection of Children from Sexual Offences Act. Despite the heinousness of the crime,
It took 7 years to get justice, with both men convicted in January 2020. The accused was declared a juvenile, whereas he was a major, he was clearly a major, and on a fresh inquiry, it was found out that the school certificate which the mother has produced is a 4 certificate. So the age in the ossification test was accepted, 21-22. The social stigma and trauma of fighting for justice in court is often overlooked. The family may have to relocate, and the child needs sustained psychological support to overcome the trauma. Bachpan Bachao Andolan, a part of the Satyarthi movement, provided the support needed to ensure justice delivery in Guriya's case. With the approval and the consent of the parents, we were able to relocate the family. So that supported the family. We provided them the mental support, mental health support, counseling support. We worked with the court for getting them the compensation. We supported her in her education. We supported her with the medical facilities, bringing the doctors, and also in the case in this, we provided a victim a separate lawyer, a good lawyer team of lawyers to work on. The law mandates that trial in child sex abuse cases must be completed in a year and trial in rape cases in 6 months. Timely justice is critical to deter the rape and abuse of children. तो अब एक चीज के बारे में बात यहां करनी चाहिए और वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कि किस तरीके से इस मामले में, ऐसे मामलों में एक सेंसिटिविटी और एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए. Well, 1041 fast track courts are functional out of 1283. So, Kailash ji, while that is a significant process, but you too will admit that this may not just be enough given the magnitude of the problem. Absolutely. A lot of more work has to be done. So, the biggest thing is that the fast justice delivery in these courts, they are functional, but how fast they are delivering justice, कितने जल्दी उनको न्याय मिल पा रहा है, ये देखने की बात है. ये गुड़िया के मामले में जो आपने अभी दिखाया, गुड़िया से जब मैं पहली बार मिला, वो बेहोश थी, बोल नहीं सकती थी. दूसरी बार जब मैं अपने दफ्तर में उससे मिला, तो वो इतनी ज्यादा भयभीत और ट्रॉमेटाइज थी कि उसे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है. और उसके पिता से मैं कई बार मिला हूं और उस पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल रहे हैं, उसको न्याय दिलाने की, उसको कंपनसेशन दिलाने की, उसको सुरक्षित जगह पे हम लोगों ने पहुंचाया, एक मकान दिला के. इस सब में जितनी बार भी मैंने उस बेटी के चेहरे को देखा और उसके पिता के निरीह चेहरे को देखा, मुझे आईने की तरह लगा कि हमारे समाज का आईना है. अगर हम जल्दी न्याय नहीं दिला पाए और समुचित न्याय नहीं दिला पाए तो बहुत हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे. लेकिन गुड़िया के मामले की वजह से कई चीजें हुई, वो मामले सामने आए, इस तरह के SOPs बनी, ये जो आपने अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हवाला दिया, ये कोर्ट बन के फंक्शनल हुए बहुत सारी जगह पर. तो न्यायपालिका के कुछ संवेदनशील जजेस ने और सरकार के लोगों ने भी इस बात की गंभीरता को समझा, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं. लेकिन अभी भी कई साल, 10-10, 12-12 साल लग जा रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक बात है. तब तक वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी की बात आती है, फिर शादी होना मुश्किल होती है, ये सब चीजें, आइडेंटिटी छुपा के रखना मुश्किल होता है. तो जितने जल्दी न्याय मिल सके और पुनर्वास हो सके, उतने जल्दी हम लोग इस समस्या का समाधान एक हद तक पा सकेंगे. और यहां पर कैलाश जी एक जिक्र मुन्ना का भी होना चाहिए. दिस वाज अ केस वेयर देयर वाज वेरी वेरी लो compensation of 50,000 rupees, but it is because of the intervention of your organization, the compensation increased to 6 lakhs. Would you like to tell us a little about this case? Yeah, of course, this is one of the first successful intervention by Bachpan Bachao Andolan or my foundation in case of a male child sexual abuse. It was in October 2019 when this child has been sexually abused by his own uncle. फूफा ने उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया.
And his mother came to our office, and then somehow she came to know about my foundation, and then we were able to lodge an FIR. That was not so easy thing. Finally, we kept on fighting in the court, and the lower court has given him a kind of interim relief of 50,000 rupees, but that was not enough looking at the economic situation of his family. Then we kept on raising this issue to High Court. So we brought this case to the High Court. Of course, this Surakshit Bachpan Fund or Justice for Every Child campaign money has been very useful in bringing this case before the High Court, as we did in many, many more cases. So on 13th of May 2021, last year, this compensation or this interim relief has been raised to a bigger amount, and that was 6 lakhs rupees. So that 6 lakhs rupees is used for rehabilitation of the child and the family. So 5 lakh rupees have been deposited in the saving bank account in the family, and 1 lakh rupees in the name of victim. So that is a success story. So small interventions with small efforts and resources can give much bigger return in terms of rehabilitation, compensation and justice. That has happened in the case of this 6-year-old boy Munna in Delhi. जी बिल्कुल कैलाश जी आप हमारे साथ बने रहिए. वी आर जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एट दिस मोमेंट, बट ये सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम आपको और भी कहानियां बताएंगे और किस तरीके से सेंसिटाइज करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, वो लिए जा रहे हैं, वो सराहनीय कदम लिए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे. प्लीज स्टे विद अस. एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस मुहिम में. नाउ चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया हैव बीन वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ अब्यूज, अ सिचुएशन मेड वर्स बाय देयर पॉवर्टी, with livelihoods lost and parents unable to feed to their families. Underage children are at a very high risk of being married off. But not only is child marriage illegal, it also results in sexual abuse and rape of children. And then justice is of course a long time process. Subject to pressure and violence, many underage girls have started raising their voice to delay their marriages. Take a look at this report. Stars in her eyes. 16-year-old Radha from Kodarma district in Jharkhand goes to school diligently. Her father, however, had fixed her marriage and the wedding was to have taken place on June 23rd. But Radha would have none of it. Head of the Bal Panchayat of Tiket Tola, a Bal Mitra Gram under the Kailash Satyarthi Children's Foundation, Radha is fully aware of her rights, aware that child marriage is illegal. मेरे घर वालों ने मुझे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी थी, जो कि इस बात का मुझे पता चला तब मैंने अपना बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई की और मैंने अपने पापा मम्मी को भी समझाया पर मेरी बात को कोई नहीं माने. Today Radha has become a role model for many other girls who are married off against their will. In recognition of her incredible bravery and determination, Jharkhand government has recognized her as the brand ambassador of Kodarma district against child marriage. She even shared her story with Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi. Even though her own family has stopped talking to her now, miffed at her for stopping her marriage. आदरणीय कैलाश सत्यार्थी भाई साहब जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने मुझसे लगातार रोज बात किए और मेरे घर वाले को भी समझाया. जिले का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते जहाँ भी मुझे पता चलता है अपने गांव या कहीं भी कि बाल विवाह हो रहा है तो मैं उसे जाकर रोकवाती हूँ और उसे जैसे मैंने अपने बारे में ये करके फिर उसे भी प्रेरित वो जागरूक करती हूँ. As per the 2011 census, there are a staggering 12 million child marriages in India, and NCRB data suggests that only 2,824 of these
were registered as cases under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 during 2011 to 2019. बाल पंचायतें जो गांव-गांव में कैलाश सत्यार्थी जी की प्रेरणा से बनाई गई हैं, उन बाल पंचायतों ने जो है गांव में मॉनिटरिंग का काम करती हैं, मीटिंग करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। तो उसी मीटिंग के दौरान जो है पता चला कि यहाँ पर बाल विवाह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 3 महीनों में 22 बाल विवाह को जो है यहाँ पर बाल पंचायतों ने जो है चाइल्ड लाइन और प्रशासन की मदद से और गांव के कम्युनिटी की मदद से जो है सफलतापूर्वक रोका है। Though education and awareness programs are playing their part in taking on this critical issue, numbers are still alarming. As many as 70 of India's districts report high incidence of underage marriages. We have to tackle this together. If you know of any such a case or see it happening around you, call 100 or call Childline at 1098 or the Bachpan Bachao Andolan complaint cell number 1800-102-7222. Contribute to the Justice for Every Child campaign so we can protect India's children together. All right, अब हम दोबारा एक बार कैलाश जी को इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, और इसके अलावा 3 और विशेष मेहमान राधा पांडे, पूजा कुमारी और इम्तियाज अली। इन तीनों के बारे में मैं एक एक करके आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राधा पांडे की। राधा जो हैं, 16-year-old गर्ल, रेजिडेंट ऑफ बाल मित्र ग्राम इन टिकैत टोला इन झारखंड, इज द मुखिया ऑफ द टिकैत टोला बाल पंचायत. Her father, against her will, arranged for a marriage from a nearby village named Pandey Bara. The tilak ceremony was scheduled to be held on the 23rd of May. However, since Radha was aware that child marriage is an offence in the eye of the law, she immediately informed the Kailash Satyarthi Children Foundation team and asked the way forward. KSCF team intervened and realized the need to look for another way out. On the very next day, a meeting of the Bal Panchayat was called where Radha was asked to take action as the head of the Bal Panchayat and set an example. Radha, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये कर लेना अपने आप में एक कितना बड़ा साहस का कदम होगा आपके लिए? पहले तो बहुत, जब मेरी बाल विवाह होने की बात चली थी उस टाइम तो मुझे उतना समझ नहीं था, लेकिन फिर जब एक बाल मित्र ग्राम बना, उसमें जब बाल पंचायत की मुखिया बनी, उसके बाद मुझे उससे साहस मिला। फिर मुझे उम्मीद हुआ कि शायद मैं अपने बाल विवाह को रोक सकती हूँ इन्हीं लोग के द्वारा। उसके बाद जब बाल विवाह की बात होने लगी घर में, तो मैं समझाने की प्रयास की, फिर घर वाले नहीं मान रहे थे, तो फिर भाई साहब जी से मैंने बात की, फिर भाई साहब जी मेरे घर वाले को समझाए तो घर वाले मान गए, और मुझे उन्हीं से और बड़ा साहस मिला कि भाई साहब जी हमारे साथ थे और हमें साथ दिए। हर एक वक्त पे हम उनसे कॉल पे बात किए, फिर उन्होंने भी समझाया, तो फिर मेरे घर वाले मान गए और मेरी शादी रुकी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साहसी कदम आपने लिया और आपको सही समय पर सहयोग भी मिला। लेट्स नाउ गो टू पूजा कुमारी. Pooja Kumari is a resident of Jharkhand's Arhara village. She is an active member of the Bal Mitra Gam. पूजा, आप अपनी कहानी बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और आप कैसे इस मुहिम से जुड़ी? और हम लोग का गांव में पहले बाल मजदूरी होता था और बाल ट्रैफिक भी होता था। छोटे छोटे बच्चे को बाहर ले गए थे काम करने के लिए, तो एक दिन अपना रिश्तेदार है जिससे बात किए, तो उन्हें हम समझाएं कि ट्रैफिक नहीं करवाना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, कानूनी अपराध है। बहुत देर समझाने के बाद वो तो समझ ही नहीं रहे थे। उसके बाद बहुत देर समझाने के बाद बताएं अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपना भैया सबको बता देंगे। तो उसने मान गया और उसने कहा ठीक है। तो हमें पता चला कि मेरा गांव से जो बच्चा गया है वो मेरा जीजा जी ही लेकर गए थे। तो उसने वो बच्चा को अपना घर भिजवा दिया और दिल्ली में 6 बच्चा का रेस्क्यू हुआ और 6 बच्चे छूट गए और जो इसे किए थे उसको जेल हो गया 3 आदमी को। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जो कदम उठाया और
you were aware and you were able to make a difference and question those who were obviously involved in this heinous act. Let's now tell you the story of Imtiaz Ali. He belongs to a family of 6. His father works in a bangle factory in Delhi and earns about 2,000 rupees a month. Rest of his family resides in a village in Bihar. Financial conditions of the family forced Imtiaz's parents to send him with an uncle to Delhi. This uncle promised the family he'll send Imtiaz to a school and teach him skills, but something totally different happened. Imtiaz, आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ और आपको उसके बारे में कैसे पता चला और आज स्थिति कैसे बदली? जब मैं 8 साल का था तो उस समय मेरे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। बहन भी बड़ी थी, उनका शादी करना था और पिता उतने सक्षम नहीं थे कि कमा के बहन का शादी कर दे और घर भी चला सके। हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो उस समय मैं छोटा था, गांव में भी बच्चे और सब थे, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। तो गांव के ही दलाल ने मेरे मम्मी पापा को फुसलाया, बोला कि उसको दिल्ली ले जाते हैं, वहां पे मेरा भी बेटा पढ़ता है, वहां पे पढ़ भी लेगा और कुछ पैसा भी कमा लेगा, करके स्थिति तुम्हारी खराब है। तो उन्होंने मम्मी पापा सोचे कि चलो ठीक है, वहां जाएगा, पढ़ भी लेगा, कमा भी लेगा, घर की स्थिति भी सुधर जाएगी। तो उनके साथ मैं दिल्ली आ गया जरी के काम करने के लिए। मेरे साथ 7 बच्चे आए और उनके कारखाने में, वहां पे शुरू में हम लोग बहुत ही अच्छे से रहे। पहले दिन टीवी देखे, अच्छा खाना खाए, लेकिन उसके दूसरे दिन ही हम लोगों को काम पे बैठा दिया गया और थोड़ी सी भी गलती हो जाती, क्योंकि हम लोग नए थे, सुई पकड़ते हाथ में चुभ जाती और पीछे से थप्पड़ मार देते। जैसे सोते आंख के सामने कैंची लेकर आते, आंख के जो पलके उनको काटने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा उस समय डर जाता था। जहाँ पे बचपन आंदोलन के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों द्वारा मुझे छापामारी कार्यवाही के द्वारा मुझे वहां से छुड़ा लिया गया और मैं वहां से आजाद हुआ। फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास गया और वहां से मैं राजस्थान आया, बालाश्रम में। वहां पे मैं अपनी पढ़ाई 4वीं कक्षा से प्रारंभ किया और अभी मैं DGNM फर्स्ट ईयर में हूँ। नर्सिंग कोर्स है ये और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत ही खूब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हम लोगों के साथ साझा की, हम लोगों को बताया। These are stories that are inspiring stories, but they're paved with so much pain, Kailash ji. There was suffering in their life, but they did not give up. Armed with awareness and education, they were able to see the brighter side of the day. Absolutely. So it is not just about them. Each one of them is a hero, is a legend. Someone who is inspiration for many others because they have not helped themselves, they have helped others through their courage and compassion. आप ये देखिए कि ये तीनों बच्चे जो हमारे हैं, पूजा ने अपने घर में अपने बहनोई के खिलाफ आवाज उठाई। हम लोग तो थोड़ा सा बाहर से मदद देते हैं, इसमें हमारी भूमिका बहुत कम है, लेकिन इनके अंदर इनहेरेंट इनबिल्ट करेज है कुछ कर पाने का। बच्चों के अंदर थोड़ा सा हमें मदद करने की जरूरत है। इसने अपने घर में ही इतनी बड़ी आवाज उठाई और अंत में अपने बहनोई को मनवाया कि वो ट्रैफिकिंग का काम छोड़ेगा। जो बच्चे उसके या उसके साथियों की मदद से गए थे उनको छुड़ाया गया। इसी तरह पूजा के तो माता पिता ने और बड़े भाई ने उससे बातचीत करना बंद कर दी थी। शादी तो किसी तरह रुक गई थी उसकी, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था, अलग खाना दे दिया जाता था। वो घर में ही एक तरीके से अछूत हो गई, बहिष्कृत हो गई। मुझे सचमुच बहुत सौभाग्य है मेरा कि ऐसे बच्चे सीधे फोन उठाकर हमसे बात कर लेते हैं। उसने जब मुझसे बात की तो मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया और अधिकारियों से बात की और बाद में 2-3 दिन के अंदर ही वहाँ के DM और बाल सुरक्षा अधिकारी और तमाम सारे लोग, पुलिस के चीफ, सब उसके गांव में पहुंचे और उस बच्चे का बहुत अभिनंदन किया, स्वागत किया। तो ये जो बाल विवाह हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि एक ट्रैफिकिंग का ही एक आधुनिक
स्वरूप है, जो पुरानी परंपरा है उसका जो आधुनिक स्वरूप है वो उस तरह का है, ट्रैफिकिंग है। बाल विवाह रोकने के लिए हमारे काफी प्रयास हैं, और खासकर ये जो 650 के लगभग हमारे बाल मित्र गांव हैं जिनके 2 बच्चे थे अभी, पूजा और राधा, बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने न केवल खुद के साहस का परिचय दिया बल्कि उस इलाके के बाल विवाह रुकवाए, ट्रैफिकिंग रुकवाई। तो हमने ये सीखा कि बच्चों की जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो साहस है, जो उसके अंदर ऊर्जा है, अगर उसका सही मायनों में समाज में उपयोग होगा या वो उपयोग करने के लिए आज़ाद होंगे तो सचमुच एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, and these are extremely inspiring stories, born out of grief, but they were able to, armed with education and information, see the light at the end of the tunnel and make their life better. Thank you very much for facilitating these journeys. Let's stop for a short break at this moment, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। Welcome back, and as we come to the end of this journey, we would like to mention that while yes, there is a problem, you have to see that silver lining as well. For instance, the Nirbhaya funds. The Nirbhaya fund, which was not being utilized in 2019, or there was very low utilization of a meager 11%, rose to 47% in 2021. This is a welcome change, which means that all the matters that Kailash ji was talking about, emphasizing on childhood, emphasizing on compensation, emphasizing on education, and for which a special fund was created by the government, its utilization means that some pleasant change is taking place. Kailash ji, we'll end this broadcast with your closing message. What would you have to say? I can say only one thing, that these children are all our children. And with this message, I would always say that every child matters, every childhood matters, every minute matters, every bit of our action and intervention matters. They are all our children. बहुत ही जरूरी संदेश कैलाश सत्यार्थी जी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट, taking us through this journey. Much more success to you as you carry on with this very noble effort. And as we come to the end of this broadcast, हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप डोनेट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें इस मुहिम को, तो आप ज़रूर करें। इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर भी और अलग अलग माध्यमों से भी, NDTV के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट।